संसदः अर्थसंकल्पनासत्रम् अद्य प्रभृति समारभते। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः द्वयोः सदनयोः संयुक्तम् उपवेशनं सम्बोधयेत्। तावत् वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः श्वः उपस्थापयेत् अन्तरिम अर्थसंकल्पनापत्रम्। अंतरिम अर्थसंकल्पनासत्रात् प्राक् अर्थव्यवस्थाम् आलक्ष्य बृहत्तमा सूचना। प्रवर्तमानवर्षे अपेक्षया द्रुतगत्या समेधमाना अर्थव्यवस्था स्यात् भारतस्य इति प्रतिपादितं। गतम् अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषद्वारा भारतस्य विकासमितेः अनुमानं समेध्य 6.7% सञ्जातम्। भूमिवञ्चना प्रकरणे सम्बद्धे धनाशोधन विषये झारखण्डस्य मुख्यमन्त्रिणा हेमंत सोरेन इत्यमुना समं प्रवर्तननिदेशालयस्य अद्य परिपृच्छा। तावत् झारखण्ड मुख्यमन्त्री विधायकदले सम्मिलितान् विधायकान् अद्य मुख्यमन्त्रिणः आवासे एव स्थातुं प्रदत्तवान् निर्देशम्। प्रचण्ड हिमपातस्य अनन्तरम् अटलाख्यं सुरङ्गं निकषा निरुद्धाः 300 पर्यटकाः परित्राताः। दिल्लीं तन्निकटवर्ति क्षेत्रं च समेत्य उत्तरभारतं निहाराच्छन्नं। दृश्यता तावत् अत्यल्पदौर्यमिता। ऋतुविभागेन अद्य वृष्टेः अस्ति प्रकाशिता सम्भावना। चेन्नई नगरे आयोज्यमानानां खेलो इंडिया यूथ गेम्स इत्येतेषां क्रीडानां 6ठं संस्करणम् अद्य समाप्नोति। सायं 6 वादनात् आयोजयिष्यमाणे समापनसमारोहे केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः भवेत् उपस्थितः। दक्षिणाफ्रीका देशे अनुवर्तमाने अंडर-19 इति आयुवर्गीये क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगिताक्रमे भारतस्य विजयेन समं समारम्भः। न्यूजीलैंड दलं 14,200 धावनाङ्कैः पराभूतम्। 81 धावनाङ्कक्रमे एव अवरुद्धं न्यूजीलैंड दलम्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। ऐषमः आयव्ययपत्रकसत्रम् अद्य प्रभृति आरभ्य फेब्रुवरी मासस्य 9 दिनाङ्कं यावत् प्रवर्तयिष्यते। अद्य राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः अभिभाषणद्वारा आयव्ययपत्रकसत्रम् एतत् समारब्धं भवेत्। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः च श्वः अर्थात् फेब्रुवरी मासस्य 1 दिनाङ्के अन्तरिमम् आयव्ययपत्रकं सदने प्रस्तोष्यति। तावत् गतदिने संसदीयः कार्यमन्त्री प्रह्लादः जोशी लोकसभा राज्यसभयोः राजनीतिकदलनेतृभिः सह सदने कार्यं सुचारुतया प्रवर्तयितुम् उपवेशनं कृतवान् आसीत्। अन्तरिमाय व्ययपत्रकप्रस्तुतेः पूर्वम् अन्ताराष्ट्रियदृशा भारताय काचित् महत्त्वपूर्णा वार्ता समक्षम् आगता। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषानुसारं विश्वस्मिन् भारतं सर्वापेक्षया तीव्रगत्या आर्थिकविकासं कुरुते। अन्ताराष्ट्रियमुद्राकोषेण अनुमितं यत् ऐषमः आयव्ययपत्रकसत्रे भारतं प्रतिशतं 5.6 इत्यस्मिन् स्थाने प्रतिशतं 7.6 परिमितया विकासं कुर्यात्। मंगलवासरे अन्ताराष्ट्रिय मुद्राकोषेण वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इत्येषा सूचना प्रकाशिता। सूचनायाः अनुसारं भारतीया विकासमितिः आगामि वर्षद्वये प्रतिशतं 5.6 एव भवेत् इति अनुमानम् अस्ति। अक्टोबर मासात् च वर्षद्वयाय विकासमितिः वर्धमाना स्यात्। भारतीय जनता पार्टी इत्यस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा नवदिल्ल्यां दलस्य राष्ट्रिय महासचिवानाम् उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। तत्र उपवेशने सहभागकर्तृषु भाजपा महासचिवौ अरुण सिंहः विनोद तावडेः चापि उपस्थितौ आस्ताम्। झारखण्ड राज्यस्य मुख्यमन्त्री हेमंत सोरेन इत्येषः प्रवर्तननिदेशालये उपस्थितः भवेत् अद्य। अवधातव्यं यत् भूमिवञ्चना प्रकरणसम्बद्धे धनाशोधनविषये परिपृच्छायै सः तत्र आकारितः अस्ति। तावत् विगतस्थितौ यदा तस्य लुप्तविषये अनुमानकथनानि प्रवर्तमानानि आसन् तन्मध्ये सोरेन इत्यसौ रांचीनगरे विधायकैः सह उपवेशनं कृतवान्। उपवेशने तस्य पत्नी अपि सम्मिलिता आसीत्। तावत् झारखण्ड मुख्यमन्त्री विधायकदले सम्मिलितान् विधायकान् मुख्यमन्त्रिणः आवासे एव स्थातुं निर्दिष्टवान् अस्ति।
दर्शकाः भवन्तः जानन्ति एव यत् संस्कृतभारती चेन्नैनगरे अचिरादेव पञ्चमस्य संस्कृतलघुचलच्चित्रमहोत्सवस्य आयोजनं कृतवती, यत्र श्रेष्ठानि लघुसंस्कृतचलच्चित्राणि निर्दिशितानि पुरस्कृतानि अपि। अत्र हि भारतं समेत्य USA, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशेभ्यः अपि संस्कृतचलच्चित्राणि प्रेषितानि आसन्। तावत् एतस्य आयोजनस्य निर्णायकमण्डले अन्यतमभूतं तमिलचलच्चित्रनिर्देशकं मोहनजी इत्येतं सम्मिल्य अस्मदीयः सहयोगी नारायणदत्तमिश्रः संस्कृतचलच्चित्रनिर्माणस्य भविष्यविषये अथ तदीयानुभवविषये तं पृष्टवान्। मया सह वर्तते मोहनजी इत्येषः, यः तमिल निर्देशकः वर्तते, तमिलचलच्चित्राणि निर्माति। तावत् महोदयं वयं तत्र पृच्छामः यत् वस्तुतः कः अनुभवः भावत्कः। भवान् तु अत्र निर्णायकमण्डलीषु अपि तत्र भवान् एकतमः आसीत्, तर्हि संस्कृतचलच्चित्रनिर्माणक्रमे भवान् कथं भविष्यं पश्यति संस्कृतचलच्चित्राणां? I am very amazed and very wondering how this young generation guys did a great job like this in Sanskrit. I have seen many short films in Malayalam, in Marathi, in Tamil, and some films in Hindi. They have produced quality films, but this is the first time I am witnessing myself in Sanskrit language, and the two of the films are still in my heart. I am very much connected to those films. People must find and watch those films and should encourage the filmmakers when they come into the silver screen. When they are doing, coming into movie industry, people should support those filmmakers because doing a short film in Sanskrit is very tough. A already built industry, it's easy to produce movies and it's easy to direct. When it is in the starting stage, when it is in the beginning stage, he is investing his own money in his own interest. Doing a short film is very, very tough. We should encourage the youngsters like something. We have to praise them, we have to celebrate them. अस्तु, बहुशः धन्यवादः। एषः आसीत् मोहनजीवर्यः, यः चलच्चित्रनिर्माता अस्ति वस्तुतः तमिलचलच्चित्रक्रमे। तावत् संस्कृतचलच्चित्रनिर्मातारः येऽपि सन्ति ते ईदृशान् एव जनान् सम्मिल्य तत्र अनुभवं प्रवर्धयन्तः सन्ति। एवमेव संस्कृतचलच्चित्राणां प्रवर्धनं भवेत्, श्रीवर्धनं भवेत् इत्येव कामयमानाः वयं। तावत् अत्र इतः चेन्नैतः DD न्यूज़ इत्येतदर्थम् अहं नारायणदत्तमिश्रः छायाङ्कनकारेण जयशङ्करेण सह। तावत् अचिरादेव आयोजिते पञ्चमे अन्ताराष्ट्रिय संस्कृत लघुचलच्चित्रमहोत्सवे अनेकानि संस्कृतचलच्चित्राणि प्रस्तुतिं गतानि। तत्र विषमस्थित्यामपि स्त्रीशक्तीकरणम् आधृत्य निर्मिताय अग्निकणः इत्याख्याय संस्कृतलघुचलच्चित्राय तृतीयपुरस्कारः प्रदत्तं गतः। अस्मदीयः सहयोगी नारायणदत्तमिश्रः एतस्य चलच्चित्रकस्य निर्देशकं, नायिकां च सम्मिल्य संवादं साधितवान्। अन्ताराष्ट्रीय लघुचलच्चित्र महोत्सवे वस्तुतः तृतीयं पुरस्कारं ये प्राप्तवन्तः तेषु अत्र द्वौ स्तः अस्मत्सविधे। एकः स्वयं निर्देशकः अस्ति, अतः एका तस्य चलच्चित्रस्य तृतीयपुरस्कारभाजस्य चलच्चित्रस्य नायिका अस्ति। तर्हि आदौ निर्देशकमहोदयम् अहं प्रक्ष्यामि यत् वस्तुतः कः अनुभवः भावत्कः, कथमिव संस्कृतचलच्चित्रं निर्मातव्यम् इति तत्र भवतां मनसि एवं आगतम? मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ, BMS में मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ। वहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर में संस्कृत लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर वहाँ पे हमें संस्कृत में आयुर्वेद के रिलेटेड सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो हमारे थोरात सर है जिन्होंने हमें ये प्रस्ताव रखा कि फ़िल्म की कंपटीशन यहाँ पे होने वाली है चेन्नई में, सो आप इंटरेस्टेड हो तो करोगे क्या। और बेसिकली मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि फ़िल्म कुछ करे, और इसके लिए मैंने सर को बोला कि हाँ करते हैं। मैम को मैंने पूछा कि आप मेरे साथ फ़िल्म करेंगे क्या, मैम ने भी हाँ बोला। तो इसकी वजह से हमने दोनों ने मिलके एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि बेस्ड ऑन मदर सेक्रीफाइस। ओके, उसके ऊपर हमने वो फिल्म लिखी और एक दिन में, मतलब वी आर नॉट प्रोफेशनली डूइंग इट, वी आर जस्ट डूइंग इट पैशनेटली। सो
हमने एक दिन में पूरा शूटिंग ख़त्म किया। अस्तु तर्हि भवती अत्र नाम अभिनयं कृतवती का समस्या अनुभूता भवत्या वस्तुतः नाम भवती तु संस्कृतं न पठितवती इति अहं तत्र विचारयामि वस्तुतः तत्र संस्कृतशब्दोच्चारणे किं काठिन्यम् आगतम् अथवा भावप्रदर्शने किं काठिन्यम् आगतं तद्विषये ज्ञापयतु। वैसे मतलब हम लोग को फर्स्ट ईयर में मतलब जैसे इन्होंने बताया भवती अपि महाराष्ट्रतः वा? हाँ सेम फ्रॉम महाराष्ट्र। जैसे इन्होंने अभी बताया कि हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और आयुर्वेद इट्स टोटली बेस्ड संस्कृत बेस है, तो संस्कृत बोलने में इतनी कठिनाई नहीं आई क्योंकि श्लोक वगैरह इन सब में से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बात करते आ रहे हैं। बट जो हम लोग एक्ट करते हैं तो उसमें है कि मराठी शब्द में पहले लिखा गया था स्क्रिप्ट मराठी में, उसको ट्रांसलेट कर दिया संस्कृत में, तो थोड़ा सा था कि एक्टिंग में वो कैसे लाया जाए। तो पहले सबसे पहले मराठी स्क्रिप्ट को पूरा फील किया, मतलब कि मैंने खुद को उसमें डालने की कोशिश की पूरी तरह से, और वही स्क्रिप्ट संस्कृत में बस लैंग्वेज अलग है ये सोचकर बोलना शुरू कर दिया। और बेसिकली एक वुमेन अपने सैक्रिफाइसेस कैसे करती है अपने बच्चे को या अपने स्वाभिमान ना खोकर, मतलब बहुत सारी औरतें ऐसे होती है कि हार मानकर अपना सब कुछ छोड़ देती है कि या व्हेन यू गो टू सुसाइड या कुछ गलत चीज़ें हो जाती है, बट खुद का स्वाभिमान रख के और खुद कैसे खड़े होना है, खुद को कैसे प्रूव करना है और अपने बच्चे का भविष्य कैसे आगे अच्छे से चलाना है, ये सब सोचकर एक महिला कैसे प्रवृत्त हो रही है और कैसे महिलाओं ने प्रवृत्त होना चाहिए, ये हमने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। वयं दृष्टवन्तः यत् कथं संस्कृतेतरजनाः अपि नाम येऽपि तत्र संस्कृतं न पठन्तः सन्ति तेऽपि संस्कृतचलच्चित्रे तथा दक्षाः जायमानाः सन्ति चेत् चलच्चित्रं निर्मान्ति। एवमेव वस्तुतः संस्कृतचलच्चित्राणां संस्कृतचलच्चित्रमहोत्सवानां साफल्यमस्ति। तावत् अहं तत्र छायाङ्कनकारेण जयशङ्करेण सह नारायणदत्तमिश्रः DG न्यूज़। प्रचण्ड हिमपातस्य अनन्तरम् अटलाख्यं सुरङ्गं निकषा निरुद्धाः 300 पर्यटकाः परित्राताः सन्ति। दिल्लीं तन्निकटवर्ति क्षेत्रं च समेत्य उत्तरभारतं निहाराच्छन्नम् अस्ति। चेन्नई नगरे आयोज्यमानानां खेलो इंडिया यूथ गेम्स इत्येतेषां क्रीडानां 6ठं संस्करणम् अद्य समाप्तिं याति। सायं 6:00 आयोजयिष्यमाणे समापनसमारोहे केन्द्रीय खेलमन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः उपस्थितः भवेत्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।